सारे के सारे कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मंडे को मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा आरफा बाजी फिर ऑफ हो गई। आई गॉट कपल ऑफ कॉल्स यस्टरडे और इट वाज संडे एंड आई गॉट एक कॉल तो मुझे ख़ास तौर पे आ जाई कि क्या आपकी कोई प्रॉब्लम है कि यू टेक ऑफ एवरी फ्राइडे। आई डोंट टेक ऑफ एवरी फ्राइडे, आई वर्क 7 days a week, 7 दिन हफ्ते के काम करती हूँ। वंस आई एम इन द ऑफिस आई डू ऑल थिंग्स, वंस आई गो होम आई एम बर्तन धोने वाली माई, आई एम कपड़े धोने वाली माई, आई एम पोछा फेरने वाली माई, एंड देन आई एम अ गुड शेफ एज वेल बिकॉज आई हैव टू कुक फ्रेश फूड फॉर माई सन इन लॉ। सन इन लॉ, आपको पता है दामाद जो होते हैं उन दामादों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और तो मेरा एक दामाद भी है। आई हैव वन दामाद named Muhammad Ali. He's my son-in-law. No in-law, son. Forget about the in-law part. What is she talking? I'm listening and I said, where does this come from? बेटे जो होते हैं ना वो साथ खड़े हो जाते हैं। वो मेरा बेटा नहीं, वो मेरा दामाद है। मैं सोच रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। No, वो मेरा दामाद है। एनीवेज, Only son. आप तमाम को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। अभी फ्यू मिनट्स अगो मेरी एक खातून से मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया अरविंदर कैल्सी, वंस अपॉन अ टाइम यूज्ड टू बी आवर एडवर्टाइज़र एंड ही सेंट हर टू मी। जॉब्स नहीं हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से वो लोग जो आए हुए हैं दोज हु आर वेरी वेल प्लेस्ड। बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो सिक्योरिटीज़ में या हमारे इन डिपार्टमेंट्स में जॉब करना चाहते हैं। समटाइम्स हमें क्लू नहीं मिल सकती। तो आज वी आर लकी इनफ कि हारून भाई ने ये सिलसिला तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया था, जिसमें हमारे तमाम के तमाम जो इदारे हैं, जिसमें हमारा पुलिस का भी है, कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज भी है, नेवी भी है, आर्मी भी है, CBS कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज भी हैं, और ऑफ कोर्स पुलिस का तो मेरा ख्याल मैं पहले ही कह चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ़ इदारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। डाउनटाउन की तरफ ये जॉब फेयर हुआ करता है, जिसमें वो लोग जो पुलिस को, आर्मी को, कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज या किसी भी डिपार्टमेंट को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जाइए वहाँ से मुलाकात कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, और अगर आप समझते हैं कि आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो यू मस्ट अप्लाई। ठीक, आई हैव अ वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइन, दैट इज़ जनाब हारून खान। सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब नहीं, सिर्फ हारून। आपके लिए ये सिर्फ हारून है। इतनी फॉर्मल कैसे हो, क्या हो गया आज? बड़े लोग बैठे हुए थे ना, मैंने कहा हारून भाई यू स्टार्टेड दिस एंड यू बीन डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, एंड हारून भाई इज़ वन ऑफ द पर्सन जो कनाडा तब आए थे जब कनाडा बहुत ही हर चीज़ वो सो अट्रैक्टिव, और खल पाकिस्तानी थे। हमारी इंडियन कम्युनिटी तो अराउंड 100+ ईयर्स से सिख कम्युनिटी यहाँ पे कनाडा में आबाद है, बल्कि पूरी दुनिया में आबाद है, मगर पाकिस्तानियों ने बहुत देर से आना शुरू किया। और हारून भाई यू केम इन व्हाट ईयर? October 22nd, 1972। 72 में डॉक्टर नवीद जो है ना, जो हमारे CEO थे पील के, उनके वालिद भी 72 में ही आए थे। आपके साथ 4 दोस्त आए थे। 4 दोस्त आए थे। आज भाई व्हेन यू केम? 73 में। ये बड़े ही इन्होंने आयश किए हुए, इन्होंने पैसे भी गवर्नमेंट से बड़े लिए हुए हैं और बड़ा कुछ किया हुआ है। नो, आपको तोहफा मिलता था, एयरपोर्ट के ऊपर आपको वीजा मिला। Yes, it was like they were very welcoming, warm welcoming. Even now Canadians are very welcoming. अच्छा चले। But still the good news is, I'm sure you all know, Canada came number 2 in the world. In the world. But somebody said that Switzerland is Dr. Murza was with me other day, and he said I went to Switzerland and very boring place. I did not know where to go, what to eat. I heard him on Did you? Yeah, I heard. Did you? And he said Canada is one of the finest country. I don't know who did this numbering thing, and Canada is number 1, but Switzerland, you know, there is nothing at all in Switzerland. That's what I heard him, but I have not been there, so I can't make it. Have you been there? No, I've not. You No, but that's on my list. So now she's going to check why they are number 1. Anyways, so
Haroon bhai, you came here and you've been doing so many other good things. You've been doing things in Pakistan and trying to make a change over there as well. In Canada, of course, one thing what we can give is a better opportunity for somebody to make and to make a change for others, to bring a change for others. This is the 4th year that you're doing. Third year. So it's a job fair. Would you mind to tell us first? What it is, English Urdu? English. उर्दू. Okay. जो अंग्रेजी बोलेगा ना उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे with sorry they What must it is कि I'm working with the Toronto Police for उर्दू the में last बात 35 years. 35 साल मैं से 35 साल से टोरंटो पुलिस चीफ का एडवाइज़र हूँ साउथ एशियन इशूज़ पर. इसी तरह से मैं पील चीफ ऑफ पुलिस का भी एडवाइज़र हूँ. तो ये काम चल रहा. हमारा काम ये ही इज़ वन ऑफ अवर को चेयर्स. हमारे को चेयर हैं ये मेरे साथ. तो हमारा काम ये है कि साउथ एशियन कम्युनिटी के लोगों को अगर कोई टोरंटो पुलिस से प्रॉब्लम हो तो फिर वो हमारे पास आते हैं और हम इनके पास जाते हैं. हम साउथ एशियन इशूज़ को कोशिश करते हैं हल करने की, जो रियल इशूज़ हैं. तो इसी तरह से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं. तो फिर मैंने 3-4 साल पहले सोचा कि कुछ और काम किया जाए, नया प्रोजेक्ट चाहिए. तो मैंने उस वक्त ये सोचा कि हम एक जॉब फेयर करें जिसमें सारी एजेंसीज को जमा किया जाए. काम बहुत मुश्किल था. How many total agencies? I'm bringing about 24, but there probably there may be 50 or 100 agencies like. But when I count, it's only 6 or 7. No, what do you mean 6 or 7? No. Police. No, you're counting. RCMP, No, you're counting. CBC, No, you're counting police. I'm counting Ottawa Police, Peel Police, Kingston Police, Waterloo Police. These are all different organizations. So when you count all these, then it becomes, and then you go for fire departments, Peel Fire Department, Toronto Fire Department, Waterloo Fire Department. So they are. Then you go to paramedics. So these are also. If so you in count every province, in every council, so every city, हर city की police यहाँ पे होगी. What is the date? September 16. 16 सितंबर. हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक. सही. Carry on. यहाँ पर ये जो है ये जो काम हो रहा है ये हो रहा है HMCS यॉर्क. HMCS यॉर्क जो है वो टोरंटो में नेवल हेडक्वार्टर है और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे अपनी बिल्डिंग देते हैं. भाभी ये बड़ा मुश्किल काम है, आप गवर्नमेंट की बिल्डिंग में जाके अपना फंक्शन करें. तो HMC यॉर्क में है 16 तारीख को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक. ये 659 लेक शोर पर है और यहाँ पर ये लेक शोर और बाथर्स के पास है. जब आप वहाँ जाएंगी तो आपको साइन नज़र आता है बोर्ड HMCS यॉर्क का. बिल्डिंग जो है ये अंदर है. यहाँ पर पार्किंग फ्री है और एंट्रेंस भी फ्री है. सिर्फ ये है कि मेरी दरख्वास्त है लोगों से कि वो अपने साथ एक फ़ोटो ID ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग है, हो सकता है वो आपसे ID मांग लें. For sure. तो ये है. यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल है 22-24 एजेंसीज आएंगी जिसमें है RCMP है, OPP है, नेवी है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है. उसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑटवा पुलिस, किंगस्टन पुलिस, यॉर्क पुलिस, टोरंटो पुलिस, पी पुलिस, वाटरलू पुलिस, नाइग्रा पुलिस. तो ये मिलाकर इसके अलावा इनके वो हैं सब यूनिट्स, तमाम यूनिट्स हैं. और ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं. तो ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग इन चीज़ों में जाएं. हम हर बच्चा हमारा डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर नहीं बन सकता. तो मैं समझता हूँ कि ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ जाएं. तो जमाल भाई इससे आपका फ़ायदा ये भी है कि पे चेक अच्छा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है और फिर आप कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहे हैं. बहुत सारे लोग इस शहर में बहुत काम करते हैं जो मेरे मतलब एक वर्ड कहूँगा, मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं सुनता हूँ रियल एस्टेट एजेंट कहते हैं हम खिदमत कर रहे हैं. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि रियल एस्टेट एजेंट क्या खिदमत करता है. ये मेरा ख्याल है. जो लोग मेले करते हैं वो कहते हैं हम खिदमत, ये नहीं है. खिदमत ये है कि अगर आप पुलिस में जाएं, OPP में जाएं, RCMP में जाएं, तो यहाँ आप वाकई नेशन की खिदमत कर रहे हैं, अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं. इन लोगों को, इन एजेंसीज को
आपके लोगों की ज़रूरत है कि बाज़ दफ़ा ऐसे मौके आते हैं, मैं तो इतने साल पुलिस को देख रहा हूँ कि जब पुलिस घर में जाती है तो लोगों को भाभी अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती, तो वहाँ पर इनकी ये कोशिश होती है कि जो हमारे उर्दू या अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं, उर्दू या पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, श्रीलंकन बोलने वाले लोग, ये कोशिश करते हैं उनको ऐसी जगहों पर भेजें। Exactly. तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ ताकि लैंग्वेज बैरियर ना ताकि रहे। लैंग्वेज बैरियर के अलावा ये भी नहीं होना चाहिए कि आपको कल्चर का प्रॉब्लम हो, तो कल्चर का प्रॉब्लम होगा तो भी प्रॉब्लम है। तकरीबन 4-5 साल पहले टोरंटो पुलिस ने, विच इज़ अमेजिंग, कि उन्होंने तमाम रिलीजियस के लोगों को बुलाया था। उन्होंने सरदारों को, सिख कम्युनिटी को बुलाया, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को बुलाया, उन्होंने मुसलमानों को बुलाया। तो मैं मुसलमानों के साथ अपने मौलाना ले गया था। वहाँ पर हमने पुलिस को ये डेमोन्स्ट्रेशन दी थी कि जानमाज़ क्या है, कुरान शरीफ क्या है, तस्बीह क्या है, इसी तरह से हर रिलीजन है, ताकि जब पुलिस वाला जाए अंदर किसी के घर में तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसने जानमाज़ पे पाँव नहीं रखना, उसको मालूम होना चाहिए कुरान को। तो यानी इतनी डेप्थ में ये पुलिस वाले आपको अंडरस्टैंड करते हैं। मगर यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि जानमाज़ हर वक्त तो नहीं वहाँ पड़ा होता, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट हमारा, आप बिल्डिंग में चले जाएँ, आप हॉस्पिटल में चले जाएँ, बाकायदा नमाज इबादत की जगह बनी हुई है, कुरान पाक रखे हुए हैं, प्रेइंग मैट्स रखी हुई हैं वहाँ पे। वी आर वेरी थैंकफुल, दिस इज़ सच अ वंडरफुल कंट्री कनाडा, कि आप जहाँ जाते हैं किसी भी मज़हब को, किसी भी शख्स को इबादत से मना नहीं किया जाता। How long you been doing this? Just over 33 years. No, 33 years. And 33 years, any good or bad thing? It's all been good. All the good. No, See? we must introduce, this is Shan Branton, and he's a superintendent police in Toronto. Toronto Police. Toronto Police. So Toronto Police is very close to Haroon Bhai's heart. He always brings somebody from Toronto Police. Shan Branton. Now, you are doing this program with him, and this is HMC York 16th September ko program hai, and they are hiring in different departments or opportunity to join these departments. Would you mind to tell something us about this job fair? I had the privilege of attending the last one with Haroon, and it's an opportunity where you can explore all first responders within the military, whether you want to be a paramedic or different police services, because geographically you may live in Toronto or you may live in London. Some people may have just gone to school for policing or something along those lines, or they may have come from a different country and they may have a background in policing or in the military, which may be an asset for them applying for some of the positions. We are dealing with positions that are civilian and uniform positions. When I say uniform positions, there's police officers, but we also have other roles where they wear a uniform, but they're considered civilian members. So they would be like a parking enforcement officer, an officer that would work at the courthouse, that will assist with security at the courthouse, and some of those officers actually work at our headquarters, and we also have officers that actually go out into the community and serve subpoenas on members of the public, and they're in uniform as well. I have one example. I know somebody, he did his engineering from Ryerson University, and then immediately he joined the Canadian Army. And after some times, and he got the sword as well, which was covered by the local television network here. And later on, he said it was a great exposure over there, and afterwards he joined some other company. So this means if you are an engineer, you can try your career in one of or any of these departments, looking at what the opportunities are. Is that right? Yeah, you can apply. You can be an engineer, you can be a doctor. No. As far as within our organization, if you're an engineer, we will probably not use you as an engineer. I don't believe we have engineers on staff with the Toronto. Army has it. You have the Army. I think Army has. The Army does Army have has. I mean, does engineers. They sometimes train them themselves, but this is the opportunity where all of those agencies are together in one room, where you can find out all that information of the pathways people would like to take and all of the opportunities that are out there for people. Now I have, if I pronounce, I'm old, and if I pronounce wrong, do apologize. Shanette Williams.
Yes. Shernet Williams. Shernet Williams. Yes, Shernet Williams. One of the most dedicated and caring person. She is with me interview to interview. Her boss has given the permission to monitor her own. So that's what she's doing. A wonderful human being. Understand. So, Miss Williams, now my question is, did you attend the previous job fairs? Yes, as a matter of fact, the very, very first A one little closer to the mic. that Mr. Haroon Khan held back in 2019 was the 2020. the first one. No, Was it 19? 2019. Okay, you know better. 2019 was the very first one. We worked together. Yes. We build a, I guess, a list of all the services that we wanted to see attend that event. Not just policing, other law enforcement agencies that attended, even TTC, corrections. All of those persons were in attendance at this 2019. And of course, 2020 came, we had COVID, so we couldn't do 2020. Right, Arun? And so 2022 was then the second one, and of course this year is going to be the third one. So this is going to be the third year. This is Miss Williams, and she was one of the organizer with to come. Yes. Yeah, great opportunity for. It is a great opportunity. This is what it is. Anybody who has the previous history of army or policing back home in India or Pakistan, they can also come join after going through, seeing what is in it for them. Of course, I mean, that's job-related experience that they can definitely use in their policing career here in Canada, right? Okay. They're going to be trained, but they have those skill sets that they gained from in the military, whether they're served in the police services before, that they can definitely rely upon when they do get hired as a police service. Is there any age limit there? You cannot apply. I was asking for me. Yeah. No, you There can't is apply. no limit, actually. There is a minimum, which is 18. But he cannot. There is no limit, though. Yeah, he cannot jump a wall. You don't know. Maybe he can. You never know. Exactly. So this is a job fair taking place on 16 सितंबर को ये जॉब फेयर होने जा रहा है, जिसमें तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी, 24 से ज़्यादा. एंड जब आप मुख्तलिफ प्रोविंसेस और मुख्तलिफ काउंसिल्स को और सिटीज़ को मिलाते जाएंगे, दिस नंबर इज़ फार मोर. आप एक हेल्थी शख्स होने चाहिए, आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पे, the only I think so criteria is ज़हनी और जिस्मानी तौर पर you must be very healthy person. Am I right or wrong? आपका दिमाग सही होना चाहिए. Of course, mentally and physically you got to be perfect. Yes, you have You got to be perfect. Because no, you have to think ahead. And you have to be calm, because I'm sure these people like I live with them kind of, but they are so cool. They don't take their gun and start killing people. Otherwise, there will be half of the people will be dead. Of course, वो तो departments की training भी होती है, but it's a good opportunity. And yes, people used to apply before. Students go to the policing school as well, but this is a great opportunity. At any age, at any ज़िंदगी के हिस्से में आप पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं. और ये मिस विलियम्स और हारून खान साहब ने जो कोशिश की कि एक छत के तले तमाम इदारों को और तमाम को एक जगह पे लेके आए. आप जाइए, प्रॉस्पेक्टस अपने लिए इकट्ठी करें, आप अपने लिए मटेरियल्स इकट्ठा करें, एंड देन यू सी व्हाट इज़ इन इट फॉर यू, एंड देन यू कैन अप्लाई. इज़ दैट राइट? So last time भी जब अप्लाई किया था, and it makes things much simpler. नहीं, इट मेक्स, क्योंकि अगर आप घर से बैठ के अप्लाई करते हैं भाभी, तो आप जो हैं आप उससे करते हैं, ऑनलाइन करेंगे. इसमें ये फ़ायदा है कि आप 1-to-1 बेसिस के ऊपर हर ऑफिसर के साथ 1-to-1 बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी. सिर्फ इस जॉब फेयर का फ़ायदा ये है कि आपको डायरेक्टली सवाल मिल रहा है, वरना ऑनलाइन तो आपको आधे सवाल मिलते हैं, आधे जवाब नहीं मिलते. इस पर ये फ़ायदा है कि आप Direct communication with all those people. To all our listeners and viewers right now who are interested in something like that, how would you encourage them to come and join you guys? Somebody said, I got two questions. One, though, I'm afraid that I'm going to lose one of my own employee, one of my own associate. I'm going to lose him because he asked a question
let me ask you. वो कहते हैं, my question is how many South Asian applied and hired from the first job fair? We don't know, and we cannot say that. So they applied and you did not do follow, because you know anybody who applies. Nobody will keep those numbers. Hiring criteria is tough. How to cope with the situation? What is the hiring criteria? That's where it is. You are going there, talking to people, whoever you want, whichever department you want to, find out what the criteria is and get yourself ready. Exactly. If you are underweight, you increase your weight. If you are overweight, you decrease. If you need some higher education, you do that. So maybe in a year or two, because I know, I don't remember, there's a gentleman in Mississauga. He's a police officer with Peel, but then he has a training school. And every day I hear from his school, oh, Harun, he's gone, he joined today, he joined yesterday, they are joining TPS, they are joining, what's his name, I forgot his name anyway. So it's not that आगे आ रहा था. What are the tips? So one of the tip मैं आपको बताने जा रही हूँ. इस बंदे हारून भाई से राब्ता कर लीजिएगा और उस बंदे के कॉलेज में दाखिला ले लीजिएगा और फिर he makes sure that you get there. He prepares you for that. He prepares you. Like he prepares you for the practical thing, like jump. You were talking about jumping and this and that. He does that. He train you for that. One question, Superintendent Shane Branton, for you. The eyesight question. For example, Majid Jamal back home in Pakistan, he went to join army. So they disqualified him. His height was low. He went to Pakistan Army. They disqualified him because his eyesight is. So you have all the disqualified, and this is that what it is all about? So, is eyesight a hindrance? Eyesight अगर किसी की कमजोर हो तो? I wouldn't say eyesight is a hindrance, but there is a minimum level of eyesight without correction. ये नजर आ रही है, एक है कि दो है? And there's also a color blindness test. So those are the two main tests. I can't tell you the exact. It doesn't have to be 20/20. It's slightly lower than that. Yeah, it's 20/40. 18. Anyways, so अगर आपका color blind है, ये ना नीली चीज आ रही है तो आपको लाल चली आ रही है. Anyway. You have to be a perfect human being to join any of these, because these people who are there and those people. And these are just two people. No, these are only there are people. 24 other main departments. No, but what I'm saying, you have to be perfect: education, mind, setup, health. So I mean, before joining this because they not everybody can become a police officer. Or not everybody can become an OVP officer. No. But there are so many different places there. Yeah, and it's okay. As I was told that TTC department भी था, law enforcement के बाकी इदारे भी थे. Yes, Miss Williams. Yes, I was just going to add a little bit more to the criteria piece as to what one needs when they're going to consider applying to a police service. All of the police services in the province of Ontario have the same basic requirements. At least 18 years old. They have to be a permanent resident or Canadian citizen, and they must have a Class G license with no more than 60 merit points on there. We also accept applications for people who just have high school diploma. If they don't have a high school diploma, they must have an equivalency of some sort to say they completed high school. Now, if they don't have a diploma but did finish post-secondary education, we would assess their education of having a high school diploma just because they finished post-secondary education. They should be able to pass a background investigation, and part of that involves a medical assessment and psychological assessment. And of course, be mentally, physically fit, be of good moral character as well when they're thinking about applying for this job. How was the money part of it? Well, this job, again, you have to have the passion for it. When one takes this job, it should not be for the money, because there are so many other jobs out there that you can do that pay more than this job, right? But it's just the passion for the job. And the uniform, you look so good. Well, each of our services have a different type of uniform. What I'm wearing today is what we consider wear as number one, where we will wear to ceremonies or funerals. And superintendent is wearing his working uniform right now, right, when you're out on the road, etc. Yeah.
बहुत अच्छी से सेटिस्फैक्शन इफ़ यू गो एंड यू रिजॉल्व प्रॉब्लम यू डेफिनेटली वर्क. अपनी जान को हथेली पे रख के ये लोग काम करते हैं. That's where it is. एग्जैक्टली अपनी जान को हथेली पे रख के ये लोग काम करते हैं. दे वर्क फॉर आवर सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू जॉइन इट. और अगर आप पाकिस्तान से पुलिसिंग का या हिंदुस्तान से आप हैं एंड यू हैव अ पुलिसिंग का या आर्मी का कोई एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो ज्वाइन. लंबे ऊंचे जवानों की ज़रूरत होती है, तो आप यू मस्ट गो देयर. दिस इज़ HMC यॉर्क में 16 सितंबर को. आज क्या तारीख है? आज 10 से 6 दिन के बाद Next Saturday. 11 नेक्स्ट सैटरडे को होगा. ये लेकशोर एंड बैथरस्ट के इंटरसेक्शन पे है जॉब फेयर, जिसमें तमाम की तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज तशरीफ ला रही हैं. एक स्पॉट के ऊपर यू विल मीट ऑल दीज इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लेकशोर एंड बैथरस्ट. नाउ यू टेक ओवर. Lakeshore and Bathurst. So Just one block west of Bathurst on Lakeshore. on the south side of the south Lakeshore. side of Lakeshore. It is fairly clearly marked, so it's easy to identify and get in. I believe there's a gate, and there's usually a member of HMCS at the gate that will allow you in. थैंक यू वेरी मच. आपके पास एक आइडेंटिटी ज़रूर होनी चाहिए, ड्राइवर लाइसेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्डिंग में आप एंटर हो रहे हैं और ये सारी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज होंगी. जैसे मुझे पता चला है कि TTC है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस की हर एरिए के, आप नियाग्रा फॉल्स की पुलिस है, पील की पुलिस है, टोरंटो पुलिस है, ओशवा पुलिस है, किंगस्टन, ऑटवा, आप देख लीजिएगा कितने डिपार्टमेंट. कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज वहाँ पे होंगे. पैरामेडिक्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको वहाँ पे मिलेंगे. So how long is the procedure? Somebody else texted me and he said 10 to 3. From 10 to 3. सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे. शाम 3 बजे तक. मगर आप जाइए तो अपना ड्राइवर लाइसेंस ज़रूर लेके जाइए. Somebody texted me that the process is too tough and lengthy. Is that right? But that's what it is. I mean, Sometimes the process can be lengthy. It depends on what services, how many people we're hiring. We are hiring, all the services are looking for a large number of people, but it's not a process that's going to be done in a week or two. It's going to take some time where you have to initially file your application. When you're with your application, you have to have a certain level of fitness, and then there'll be some interviews, and then they will get into the background. And sometimes backgrounds do take a bit longer depending on the individual and what they have in their background. एग्जैक्टली. एंड जैसा इन्होंने कहा कि प्रोसेस वेरी करता है डिफरेंट जगहों के ऊपर. मिस विलियम्स ने एक बात कही थी, अगर आप उससे रिलेट करें, शी सेड इट इज़ पैशन. एंड अगर आप पैशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको पेशेंस आप में होनी चाहिए, टू वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड टू फ्रूट के लिए इंतज़ार करना. व्हाट इज़ बीप टेस्ट? That is the shuttle run component of the prep test. So the prep is a police. Let me just try to remember what the acronym is for, but police readiness evaluation for police. That is just the bona fide standardized fitness testing for all new recruits. It involves running. It involves breath and everything. That's Stamina. right. It involves running. It involves jumping over a wall. It involves pushing and pulling a machine. It also involves pulling a 170-pound dummy. I'm there. And with the beep test, that is the shuttle run component of the prep test, and that one needs to get to level 7 to show that they are capable of passing that beep test. Any height requirement? No, there are no more. They height used to be requirements. before, So if Many somebody years. is failed once in the beep test, they can go back again or no? Well, when you're at the Ontario Police College, that is where they have to pass. It is mandatory that they pass the prep test, which includes the beep test or shuttle run test, in order to graduate.
If they cannot pass it, then they will have another opportunity to attempt to show that they can pass that test. And one thing is, I believe before going to this, you should develop your stamina. Go and attend this seminar on 16th, 16 September को ये job fair है. You must attend it. और उसके बाद फिर आप जिम को रेगुलर ज्वाइन करें, वेट लिफ्टिंग करें, आप अपना स्टेमिना बढ़ाएं, फिर तो बॉडी को आपने प्रिपेयर करना है ना. And there are different departments. And can we talk about, since the superintendent is here, the committee I was talking to, I'm a part of, so can the superintendent, I asked the superintendent to say something about the committee we have with the Toronto Chief of Police so people will know what it's all about. Of course, we talk about it many times in your studio with different Chief of Police, but now he's here. Let's listen to him, what he has to say about the South and West Asian Consultative Committee of Toronto Chief of Police. Long name. South and West Asian Consultative Committee of Toronto Chief of Police. Yes, sir. So I have the honor of sitting as the co-chair of that committee. My other chair is a member of the community, and we represent, I believe, about 13 different countries at this point, and there's about 7 different religions. So we cover a huge amount of population, and we have representatives from the community that assist us with dealing with issues that come up that, one, we may not be aware of, and other, they allow us to come up with solutions to the problems the community is having that we may not know about, and solutions. We work together, we make those inroads and those connections so we understand the community, we understand the challenges of the community, and we support the community and serve them in the way they deserve to be served. So we meet on a regular basis. Mr. Khan has done a lot of community events. This hiring symposium is just one example of them. We have done some very interesting volunteering with members of the committee. It was a very moving one that we did last year. We went to Scott Mission in Toronto, and one of our more senior members remembers when he first came to Canada going to the Scott Mission. Wow. So it was very, very interesting, and that's why we want to connect with the community. And that way, if there's challenges within the community, or the community has a fear of something, then they have a leader within their community that can reach out to me, and I can direct them to the resource that they need. And if it's I'm trying to think of the best example. There was a religion last year that had felt that they'd been overlooked. And so they reached out through our committee to me. I ended up speaking with the chief, and the chief ended up setting up a meeting with some of the individuals within that religion to ensure them that we hadn't overlooked them, but they had felt that they'd been overlooked. And sometimes we want to make sure that we don't overlook, and the community sees us as a resource to help them. शेन ब्रैंटन से मैंने आपकी बातचीत कराई. जनाब हारून ख़ान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं. 16 तारीख आप मार्क कर लें. 16 तारीख को आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप यहाँ का कोई भी इन्फोर्समेंट इदारे को ज्वाइन करना चाहते हैं, पैरामेडिक्स को, पुलिस को, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज को और RCMP को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर मौजूद होंगे 16 तारीख को. इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड इट इज़, आप जाइए, जाके देखिए व्हाट इज़ इन इट फॉर यू, और उसके बाद फिर आप अप्लाई करें. और एक बात, हमारे साथ ऑफिसर यहाँ पे बैठी हुई हैं, एक्टिंग स्टाफ सर्जेंट, उन्होंने जो कहा कि दिस इज़ अ पैशन, कि इंसान का दिल चाहता है कि मैंने इस तरह से खिदमत करनी है. ऑफ कोर्स उसमें आप डिग्निटी अर्न करते हैं इन तमाम इदारों में. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 16 तारीख को मार्क कर लीजिएगा. इस तरह नहीं वेबसाइट हरून भाई? No website. It's mouth to mouth, and people like you are helping us to bring the message to the community. ठीक है. So we will keep on announcing this, और इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह करे कि आप लोगों को पोजीशन मिले. But I have one request. If you join police department, please do not give me ticket. That's a precondition. Just kidding, because I know once you will be a police officer, ever you see me on the road, you will give me the first ticket. I know that. Yes, I second to that. Anyways,
Harun phone bhai, number, in case if anybody. आप अपना phone number दीजिए. 416 416 540 8477 416 540. 540 8477 847. ये हरून भाई का नंबर है. देखिए जी, मैं सेल फोन देने लगी हूँ लेकिन और मेरी- ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि रात को 1 बजे भी कॉल करेंगे, ये फोन उठाएंगे देखिए जरूर. देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमने मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन दे दी है, तो मैं समझता हूँ लोगों को मुझे फोन करने की जरूरत नहीं. माजिद भाई, पहुंच जाए वहाँ पर. माजिद भाई इतने फोन आ रहे हैं, पता है फोन कहाँ से है? Turkey, Tokyo, Saudi Arabia, because the message is going across and people want to Exactly. know if they can apply from Tokyo, from कर you don't सकते have- हैं, of course, if you are Canadian, you No, no, living in yeah. I'm not going. The people living there. क्राइटेरिया उन्होंने बताया है कि यू शुड बी 18 एंड अबव. आप कनेडियन सिटीज़न होना लाजमी है. कनेडियन सिटीज़न होना लाजमी है. इसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए. ऑफ कोर्स दे विल डू बैकग्राउंड चेक होगा. इट्स नॉट दैट ईजी, मगर अच्छी जॉब के लिए और वैल्यूएबल जॉब के लिए जिस प्रोसेस में से गुजरना होगा, आप उस प्रोसेस में से गुजरेंगे. बट इट्स नॉट कि आप कंप्यूटर से किसी से बात कर रहे होंगे. आप इन पर्सन जाके मिल सकते हैं, आप उनके ब्रोशर्स को देख सकते हैं. सो बाकायदा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के बाद आप देख सकते हैं कि यस, दिस प्रोफेशन इज़ फॉर मी. हरून खान का नंबर 416-540-8477 540 8477 540 8477 आपका नंबर है. आई थैंक यू वेरी मच And thank you for giving us the time. I know you because लोगों को ये पता है, whenever I start my project, these community projects, last time at this time, if you remember, Majid bhai, this TV station behind you Exactly. was a warehouse. Yes. So she It was a flood victim. She stands beside me, and you are there always because unless you guys, like for Pakistani community, I need you. When I do some project, I need you too. To stand beside me, to help me. There was one man alone, I can't do anything. मुझे याद है लास्ट ईयर का when we wanted to do it, I called Harun bhai and I said, Harun bhai, and then we were looking for something for the place and we stopped our operation, television का operation हमने तकरीबन 1.5 महीने के लिए रोक दिया था. अरुण भाई ने फिर अपनी पुल्स को इस्तेमाल किया और फिर हमारा स्टफ़ तो बिल्कुल फ्री यहाँ से गया था. मगर आई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स ऑल एंड एवरीबडी. इट वाज अराउंड 74,000 वर्थ का सामान था जो हमने नहीं भेजा नहीं, था. ज्यादा का भेजा. नहीं, वो ये था कि हमें जो पैसा मिला था, क्योंकि हमें अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन सुपर एशिया, काशिफ का बहुत शुक्रिया कि काशिफ ने, जैसे आप टेटले चाय का डब्बा जो आप $10 का देते हैं, हमें वो $5 का मिला था, $5 का. तो आप इमेजिन करें कि हमने कॉस्ट वाइज कितनी कम कीमत पे चीज़ें ली थी और फिर वो चीज़ें हो गई थी. एनीवेज अरुण भाई, थैंक यू वेरी Thank मच. you. And Superintendent Shan Branton, thank you very much. Branton. So I live in Brampton, so Branton goes very close to my heart. Anyways, and Acting Staff Sergeant Miss Williams, thank you very kindly. You're such a sweet and lovely voice. Thank you, thank you. And if I can just add one thing, that if anyone is interested in applying to OPP or even Toronto Police, any police service, but specifically with OPP, they can go to our website at opp.ca/careers, where they're going to be able to find the information that they need. opp.ca/careers, where they can find information about मैं आपसे कहती हूँ applying. बिल्कुल आप यहाँ जाके देख लें, पहली नज़र डाल लें, but better go on 16th to this job Yes. fair. So there will be lot of, so you will be there. I will not be there. She will not be there. Because I'm actually supposed to be away. So I will not be at this one, but we will have But your department will be representation. there. Of course. Your of course. department. Yeah, personally, Your department I will will be be there. there. Certainly. Her deputy chief is coming. Yeah, our deputy Inshallah. commissioner will be there. The deputy commissioner will be there. Yes. Okay. Yes. So this is 16 तारीख को है, HMC York, 16 सितंबर को है, Lakeshore and Bathurst के इंटरसेक्शन पे. 3 बातें. You must have your driver's license because it's a government building. आपने अगर एंटर होना है, अगर आप पाकिस्तान से पुलिस या फौज या किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, you must go there.
इट माइट बी पॉसिबल कि आपके लिए बेहतरीन चॉइस और चांस हो. अगेन ऑफिसर मिस विलियम्स ने जो बात कही कि दिस इज़ फॉर दोज हु हैव पैशन टू सर्व और डेडिकेशन है, तो आप डेफिनेटली जाएंगे. इट्स अ गुड सैलरी पैकेज, मगर ऑफ कोर्स दे से कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर दोज हु आर जस्ट आफ्टर द मनी. यू कैन अर्न मनी एनीवेयर, बट अगर आपके पास जज्बा है तो कम ज्वाइन. 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक होगा. आपसे 18 साल कम अज़ कम उम्र होनी चाहिए. अगर इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर किड्स अलॉन्ग विद यू. जिन बच्चों को शौक़ है कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है, मेरी अपनी गाड़ी होगी, मैं अबू को भी टिकट दूंगा, अम्मी को भी टिकट दूंगा. आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए. ऑफ कोर्स आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो तो आप कोई भी अच्छी जॉब करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है. So look forward seeing you on 16th of September, Lakeshore and Bathurst Bay, HMC York. 16 सितंबर को. हरून खान साहब का नंबर है 416-540-8477, 540 44 84 77, 540-8477. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.